Hello guys, welcome to my channel Grow Rich with Knowledge. In my last video आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि what is investing and how we can create wealth from investing. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डू वॉच. गाइज, इन्वेस्ट तो हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में है क्यों? जैसे मैंने बोला था, स्टॉक मार्केट में बेसिकली 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है. स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, इट मीन्स यू आर बाइंग कंपनीज बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स. हाउ मच स्टॉक्स यू ओन, यू आर द ओनर ऑफ दैट स्टॉक्स. जैसे कि मैंने बोला था, यू कैन क्रिएट वेल्थ हियर. यू हैव टू इन्वेस्ट एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म. हम सभी लोगों को मालूम है कि a kingdom is not built in a day, so it takes time to create wealth. So in today's video, I will show you how to start investing in the stock market. But first of all, you need to think whether you want to invest or trade. My main motive behind this channel is to give you knowledge about stock market and financial knowledge. I knew many of the youngsters, including me, wants to be rich and get financial freedom as soon as possible. But it is not possible without investing. So this channel will give you and prepare you with knowledge for life. दोस्तों, दुनिया का richest investor वॉरेन बफेट कहते हैं कि if calculus and algebra was required for investing, I would have to go back delivering papers. इसी स्टेटमेंट से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हाउ सिंपल इट इज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. आप कम से कम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट व्हिच इज आल्सो नोन एज अ ब्रोकर. इन्वेस्ट करने के लिए आप एनएससी और बीएससी में तो नहीं जा सकते. सो फॉर दैट डीमैट अकाउंट बनाया गया है. एज देयर आर मेनी ब्रोकर्स, पीपल फाइंड डिफिकल्ट टू चूज अ गुड ब्रोकर एंड अ गुड कंपनी. सो गाइस, चूज अ डिस्काउंट ब्रोकर जो आपको कम से कम में सर्विस दे सके. So the point number 1 is find a good broker. So guys, according to me, Grow app is the best. These days, I see many people share Grow app as there is offer that if you share this app, then you will get 100 rupees. But according to me, don't fall into this, guys. If you really want to invest in stock market, then only make demat account. वैसे इस stock broker की बात किया जाए तो account opening charge and account maintenance charge 0 है. If you want to make a demat account in the Grow app, then link is given in the description. If you have any query, then let me know in the comment. I will try to solve it. Second point is decide whether to invest or trade. After you complete opening demat account, the most important decision is whether to trade or to invest. Guys, मैं आप लोगों को suggest करना चाहता हूँ कि if you have no idea about trading, then please do not trade. अच्छे से ज्ञान लेने के बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें, otherwise you will surely lose money. If you are thinking of investing, then it is a good decision. Actually, investing में भी knowledge चाहिए, लेकिन as it is for long term, there is no much problem. Only if you know what the company is doing, what is its business, then it is enough. Third point is choose a good company. As I had told you, there are more than 5000 plus companies listed in the stock market. तो हम लोग कैसे good company choose करें? As it is not possible to invest in every company. So there is a website named tickertape.in. इस वेबसाइट में आप कोई भी कंपनी easily research कर सकते हो. Now we'll click on the left corner जहाँ tickertape लिखा है. आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा options है, जैसे stocks, ETF, indices, MFs, screener, MMI, deals. So we'll click on the screener. Left corner में आप देख सकते हैं कि stock universe. So we'll click on it. तो आपको यहाँ 3 ऑप्शंस मिलेगा, निफ्टी 50, निफ्टी 100 मिड कैप, निफ्टी 100. यह निफ्टी 50 का मतलब है टॉप 50 कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप. अगेन इफ वी सी डाउन इन सेक्टर, यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस आता है लाइक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर स्टेपल्स. ऐसे ही बहुत सारे सब सेक्टर्स है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द कंपनीज. सो विल टिक इन कंज्यूमर स्टेपल्स. Now you can see the list of the companies under the consumer staples like Hindustan Unilever Limited, ITC, Nestle India. So guys, ये वही कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हम लोग हर रोज यूज करते हैं. So we'll choose any one of the company like ITC. Guys, this video is for educational purpose. I'm not recommending anyone about the stock. Just for education purpose to show you how to choose a company. So guys, first of all, we'll have to know what the company is doing. जैसे ITC is the FMCG company, so we'll click on ITC. So here you can see the graph how it performed in the last maximum years. अगर आप ऊपर देखें तो there is an operation, forecast, financials, peers, holdings, news, events. So you can click in the events. You can see how much dividend does ITC give.
and see its intrinsic value, etc. In this way, you can choose the company with research. So after researching the company, if you think that it is a good company, then you can go to your demat account and buy it. But guys, focus on business fundamentals as you're here for investing, and always see the future, what is going to happen, like whether this company will grow or his product will be required or not. ऐसे ही you will be able to choose a good company. Warren Buffett कहते हैं कि I want a simple business, easy to understand, and then I can see in general way where they will be in 10 years from now. If I can't see where they will be in 10 years from now, I don't want to invest. And always try to invest what you understand. Other than it will be a speculation rather than investing. So guys, if you like the video, hit the like button and share with your friends and families. And if you're new to the channel, then subscribe for more knowledgeable videos. Thank you. Goodbye.